Next question on partnership, admission of partner. Ananjay and William share profits and losses in the ratio 3:2. Balance sheet as on 31/3/15 is given to us. Creditors, bills payable, bank loan, general reserve, capital. Okay, so capital will go to partners capital account. General reserve, specific liability will also go to partners capital account. Now cash in hands, bills receivable, debtor list, reserve for doubtful debts, stock, furniture and building is given. Pass necessary journal and open revaluation account and cash account in books of the firm. Now write addition, also open partners capital account and balance sheet in books of the firm. Okay, so I'll make everything and show it to you. On 1/4/15 they admitted Shweta, okay, who will bring 40,000 as her capital. So cash is coming in form of capital. Cash account debit to capital and 20,000 for goodwill in cash. केस 1 गुडविल आ रहा है जब ऑलरेडी बुक्स में कहीं गुडविल है नहीं, एसेट में. सो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल. रेडिली गुडविल का फिगर अवेलेबल है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं. हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ द गुडविल विल बी विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स. सो केस 1 का ही एक्सटेंशन उस गुडविल का भी विड्रॉल हो रहा है. सो गुडविल आया तब कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल 20,000 एंड देन सेकेंड एंट्री क्योंकि गुडविल रिटेन है इन बिजनेस, सो सैक्रिफाइस रेशियो में गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल एंड नाउ आउट ऑफ दैट 20,000 10,000 इज विड्रॉन. सो योर एंट्री विल बी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश. विल डू दैट. Half of the amount of goodwill is withdrawn. Depreciate stock and furniture by 10%. So mark furniture, mark stock. इसमें adjustment है. RDD to be maintained at ₹2,000. So 1,600 ही है, उसको 2,000 करना है. Appreciate building by 20%. Building में भी appreciation है. So जिसमें भी changes है वो सब revaluation account में जाएगा and second effect चेंज्ड अमाउंट बैलेंस शीट में जाएगा. अदरवाइज बाकी सब चीजें एज इट इज यू कीप ऑन राइटिंग इन द कॉरेस्पॉन्डिंग अकाउंट्स. सो लेट्स स्टार्ट. आई स्टार्ट विद द क्रेडिट साइड. कैपिटल अनंजय एंड विलियम 60,000 एंड 48,000. सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस डालो. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000 इज फॉर अनंजय and 48,000 is for William. श्वेता अभी तक पिक्चर में नहीं है. ओके, जनरल रिजर्व रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम नहीं लेके जाएंगे, इसको स्पेसिफिक लायबिलिटी है. एंड जनरल रिजर्व है क्या? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो होता है तो वो ओल्ड पार्टनर्स को ही मिलना चाहिए. So before admission of new partner, divide it among the old partners in their old profit sharing ratio. So by general reserve 15,000 है, 3:2 में इसको बांटेंगे. So that comes up to 9,000 and 6,000. Okay. Bank loan 30,000. So no other information is given. बैंक लोन 30,000 एज इट इज बैलेंस शीट में लेके जाइए. बैंक लोन 30,000. बिल्स पेएबल 25,000. नो इंफॉर्मेशन फर्दर. सो बिल्स पेएबल 25,000 एज इट इज इन योर बैलेंस शीट. एंड क्रेडिटर्स 20,000. सो एज इट इज इन योर बैलेंस शीट. क्रेडिटर्स 20,000. Finished with your liability side. Now let's start with the asset side. Cash in hand 20,000. So cash account का opening balance हो गया. ये cash account has to be made. Okay, closing balance कहाँ से आएगा? So opening balance asset है, assets debit. So opening balance will be debit. Cash in hand. Opening balance to balance brought down 20,000. Bills receivable 28,000. Without any adjustment. So as it is in your balance sheet, bills receivable 28,000.
डेटर्स 41,600 with an adjustment. So opening में 41,600 in your inner column, and see we have an adjustment about debtors RDD to be maintained at 2,000. So we will subtract 2,000 as RDD. पहले 1,600 ही था. So 41,600 minus 2,000, 39,600 comes into picture. 39,600. अब RDD बड़ा है, मेरा एक्सपेंस बड़ा है, राइट? जब भी कोई एक्सपेंस बढ़ता है या लॉस बढ़ता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में, और आपको प्रॉफिट होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में, सेम एज योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो इंक्रीज इन RDD हाउ मच? 2,000 रखना है. पहले ओनली 1,600 था, सो 400 से इंक्रीज है, दैट इज योर एक्सपेंस. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड टू इंक्रीज इन RDD 400. Okay, this adjustment has been done of RDD. Stock 36,000. Stock के लिए भी मार्क किया हुआ है, means there is a adjustment. So what is the adjustment for stock? Stock and furniture, depreciate stock and furniture by 10%. यानी कम करेंगे assets की value. So it is a expense or a loss. Debit side में आएगा revaluation account के. So decrease in stock 10% means 3,600. So decrease in stock 3,600, and बैलेंस शीट में 36,000 का वैल्यू है स्टॉक का. सो इन द इनर कॉलम 36,000 लेस, आप उसको डेप्रिसिएट किए, सो लेस 3,600 एंड दैट कम्स इन द आउटर कॉलम 32,400. सेम फॉर फर्नीचर. सी फर्नीचर 27,000 सा, and depreciate furniture by 10%. So again loss. So revaluation account debit side 2,700, and furniture in your balance sheet inner column 27,000 less 2,700, less 2,700, that comes up to 24,300. Okay, whatever is the adjustment, दो साइड इफेक्ट देते जाओ उसको. Building 47,000. So building also has a adjustment in inner column 47,000. And see, ये वाला एडजस्टमेंट हो चुका है. Appreciate building by 20% means profit, हमारा एसेट है उसकी वैल्यू बढ़ रही है, एंड सीधा 20% से बढ़ रही है. So building increased by 20%. So 9,400, that is 47,000 into 20%, 9,400 is your increase in value of your building. 9,400. So 9,400 you have to add in 47,000 plus 9,400, that is 56,400. Okay, so this is all the adjustment except the goodwill and the capital. So let's start with the other adjustments. On 1/4/15 they admitted Shweta, who will bring 40,000 as capital. So capital लाने का entry, cash account debit to Shweta's capital. So by cash here, how much capital is she bringing in? 40,000. And simultaneously cash account में भी करके दिखाओ. So cash account debit to Shweta's capital goodwill is 40,000. Okay, who will bring 40,000 as capital and 20,000 for goodwill in cash? So again cash account debit to goodwill 20,000, and पार्टनर्स कैपिटल में तो आएगा नहीं बिकॉज कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल है, कैपिटल नहीं. सो एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल. हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ द गुडविल विल बी विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स. सो पहले गुडविल रिटेन्ड है, सो सेकेंड एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल
and goodwill to old partners capital, that is Ananjay and William, in their sacrifice ratio, as it is case number 1. Nothing said, case number 1. So sacrifice ratio. See, they have specifically given that the new partner was admitted, that is Shweta was admitted, and so old partners का शेयर जो है 3:2 is only their sacrifice ratio, because nothing is given about the new ratio. So 3:2 में आप वो गुडविल को पहले डालेंगे. The entry will be goodwill account debit to Ananjay's capital to William's capital. So buy goodwill. How much? 20,000 को break करिए in 3:2. That will be 12,000 and 8,000. Okay, and now they say half the amount of the goodwill will be withdrawn by old partners. Half the amount of the goodwill is 10,000. That will be withdrawn by old partners, means A's capital account debit, that is Ananjay's capital account debit, William's capital account debit to cash. So by Ananjay in the, that is same ratio 3:2. So Ananjay's capital account debit 6,000. William's capital account debit 4,000 to cash. So they are taking, so Ananjay's capital account debit to cash 6,000, William's capital account debit to cash 4,000. They are withdrawing. That is case 1 का ही extended form है. Cash आया goodwill में, cash account debit to goodwill. Second entry, goodwill account debit to old partners capital because it is retained in the business, and then withdraw भी हुआ है half part. So A's capital account debit, W's capital account debit to cash. Okay. These adjustments we have done. Now let's move on to the revaluation account. Total 9,400. The credit side is higher, means profit is ज़्यादा है. तो profit कौन लेगा? The value of profit will be taken over by old partners in their old profit sharing ratio, that is 3:2. इसमें new partner का कोई काम नहीं. Okay, so balancing figure निकालिए of profit. 9,400 minus 400 minus 3,600 minus 2,700 comes up to 2,700, and here A's share and W's share is 3:2. So 1,620 and 1,080. Okay, now transfer this revaluation account debit to partners capital account. So revaluation to partners capital account. By revaluation, Ananjay 1,620 and William 1,080. Okay, revaluation का कोई भी फिगर श्वेता को नहीं. जनरल रिजर्व या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉसेस का कोई भी फिगर ओल्ड पार्टनर्स को नहीं. ओके, सो लेट्स टेक द टोटल ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. टेक द टोटल ऑफ द 4 आइटम्स. 82,620 and here 48,000 plus 1,080 and 8,000, that's it. 63,080 and 40,000 over here. Okay, take the totals here quickly. 82,620, 63,080 and 40,000. Nothing in your debit side, so 40,000 here, and 63,080 minus 4,000, 59,080. So 59,080 and 76,620 here. So we'll take these figures to your partner's capital account. Ananjay 76,620, then William 59,080 and Shweta 40,000. Okay, now
फाइनली कैश का फिगर भी हमको डालना है यहाँ पर एसेट साइड में. सो टेक द टोटल ऑफ द कैश डेबिट साइड फर्स्ट. सो दिस कम्स अप टू 80,000 and 80,000 minus 6 plus 4 10,000, that comes up to 70,000, which is your balancing figure. So 70,000 is your closing cash figure. Okay, so just make the total now of balance sheet. 2,50,700. So 250,700 is your liability side total, and 250,700 is your asset side total. Okay, so now we have to pass the journal entries. I will say the journal entries and you see first revaluation account. देखिए revaluation, once you have made revaluation partners capital balance sheet and cash account, then just उनको देख के ही journal entries आप फटाफट बना सकते हो. revaluation account debit, ये 3 items है इस debit side में. so revaluation account debit to RDD 400, okay, to stock 3,600 and to furniture 2,700 is your first entry. Then credit में पड़ा है building. So building account debit to revaluation account 9,400. This is your second entry. Now partners capital में आपने profit transfer किया है. So your third entry will be revaluation account debit to A's capital. How much that will be? 1620 and W's, that is Williams capital, 1080. This is your third entry, finishing the revaluation account. Now come up to partners capital account, leave the opening balance. Now what will you do? General reserve की entry है, general reserve transfer किया है partners capital account में. So general reserve is C. क्रेडिट होता है, लाइबिलिटीज में पड़ा होता है जनरल रिजर्व विद अ क्रेडिट बैलेंस. सो यू आर फिनिशिंग इट. सो डेबिट इट नाउ. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू Ananjay's capital and to Williams capital 9,000 and 6,000. So this is your next entry. Now you are left with entries of goodwill. सो गुडविल का एंट्री कैसे होगा? कैश आया गुडविल के अंदर और कैपिटल भी था. सो बोथ द एंट्रीज, सी कैश अकाउंट डेबिट टू श्वेता's कैपिटल बिकॉज कैपिटल आया 40,000. सो वन एंट्री इज दैट. एंड नाउ सेकेंड एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट बिकॉज 20,000 वॉज टेकन फॉर गुडविल. कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. नाउ गुडविल फर्स्ट केस retained in business. So your entry will be goodwill account debit to old partners capital, that is Ananjay and William in sacrifice ratio. So goodwill account debit 20,000 to Ananjay's capital 12,000 to William's capital 8,000 because 3:2 is old ratio. He sacrifice ratio है because nothing more information is given. And now they have given in the question that half of the amount of the goodwill will be withdrawn by old partners. So half the amount of the goodwill will be withdrawn by old partners, means old partners capital account debit, that is Ananjay's capital account debit, Williams capital account debit. 10,000 से आप withdrawing कैश लेके जा रहे हैं. सो क्रेडिट करेंगे आप कैश को. सो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000, दैट इज 10,000 is to be divided in 3:2 ratio. So A's Ananjay's capital account debit 6,000, Williams capital account debit 4,000 to cash 10,000. This is how you will plot your journal entries and then take the total of debit side and credit side. Once you have done all accounts, revaluation, partners capital account, balance sheet and cash account. See, balance sheet is not required for journal entries.
टिल रीवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल और कैश अकाउंट भी बना लिया, उसको देख के आप जर्नल एंट्रीज आराम से बना सकते हो। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल जिन एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज हुआ है, देन एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट एसेट जिसका वैल्यू इंक्रीज हुआ है, एंड द थर्ड एंट्री प्रॉफिट और लॉस रीवैल्यूएशन से you have to transfer it to partners capital account. So 3 entries generally you will get from revaluation account. Then opening balance छोड़ दो partners capital का, यदि कोई general reserve या profit and loss कुछ भी डेबिट या क्रेडिट है तो उसका एंट्री पास करो। देन कैश इज गॉट फॉर कैपिटल, उसका एंट्री पास करो। देन इफ गुडविल इज गॉट इन कैश, उसका एंट्री आपको करना है। एंड देन इफ इट इज रिटेन्ड इन बिजनेस अकॉर्डिंगली गुडविल के एंट्रीज आपको, दैट कैन बी 1, 2 or 3 एंट्रीज ऑफ गुडविल विच यू हैव टू पास, एंड देन you finish your journal entries. You need not use balance sheet for your journal entries, but you need revaluation account, partners capital account and cash account for making journal entries.